Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start problem number 15. So far we have completed 14 problems. See the 15th problem carefully. The following trial balance is extracted from the books of ABC Company Limited as of 31st March 2015. Debit balances are given: stock on 1/4/2014 1 lakh, building 1,30,000, cost is 1,50,000. Purchases. So first of all, stock on 1/4/2014 is the opening stock. That is the opening stock. The opening stock will be considered while calculating cost of material consumed. Cost of material consumed. Then buildings is a tangible asset. Purchases again will take under cost of material consumed. Wages, employee benefit expenses. So before taking the items, first see the format. ABC Company Limited profit and loss account for the year ended 31st March. Revenue from operation, other income, expenses, cost of material consumed, employee benefit, finance cost, depreciation, other expenses. So total profit before tax, tax expenses, profit after tax. Now revenue from operations, sales, wages, salaries. Wages 50,000, salaries 32,000. These two items will be taken under employee benefit expenses. Employee benefit expense, wages 50,000, salary 82,000 rupees is the employee benefit expenses. Then insurance 14,900. This will be taken under other expenses. Under other expenses we will take insurance. Debenture interest, that is the finance cost. Debenture interest will be taken under finance cost 3,000. Machinery 1,60,000. This is tangible fixed asset. Then goodwill, intangible fixed asset. Investments. Investments are given, so we treat it as current investment. So there are two types of investment: non-current investment and current investment. If nothing is given, we assume it as current investment, so we have taken under current assets. Carriage on sales, that is a part of other expenses. Then bad debts, other expenses. Administrative expenses, other expense. Cash at bank, cash and cash equivalent. Debtors, trade receivable. Preliminary expenses. So regarding preliminary expenses, we have to see what is the instruction given in the problem. Trade creditor, bills payable, that is trade payable. Then equity capital, first item, share capital. Bank loan is given, so we can treat the bank loan as a short term because nothing is given in the problem. P&L account balance, reserves and surplus. Share transfer fees, other income. Share transfer fees will be taken as other income, 6,500. Sales 3,57,000. Revenue from operations. Then provision for bad debts. Here we are given bad debts as well as provision for bad debts in the trial balance. So bad debts to le liye. Already we have taken bad debts 1,000. Now old provision. The provision which is appearing in the trial balance is the old provision coming from the last year. The old provision is there. Then general reserve, reserves and surplus. 6% debentures. 6% debentures will be taken under long-term borrowings. That's all. This is the trial balance. Now adjustments you see. Closing stock on 31st March 2015 was valued at 1,20,000. However, its cost price was 1,25,000. So here the current market price and the cost price both are given. So according to the accounting principle, the closing stock should be valued at the lower of market price or cost price.
तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लेंगे। तो यहां पर 1,20,000 इज द वैल्यू एंड द कॉस्ट प्राइस इज 1,25,000। तो वी टेक 1,20,000 एज द क्लोजिंग स्टॉक। दैट क्लोजिंग स्टॉक that closing stock will be taken under cost of material consumed, and also the closing stock should be taken as inventory, 1,20,000. Twice it will come. Then provide depreciation on building 5% on WDV and machinery at 10% on cost. So depreciation will be taken twice. First under income statement, depreciation 26,500. Here are the calculations. Building 5% of 1,30,000 and machinery 10% of 2 lakh. तो एक एसेट के ऊपर WDV के ऊपर और एक एसेट के ऊपर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो हियर इट इज गिवन बिल्डिंग 5% ऑन WDV। तो सी द ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द WDV ऑफ बिल्डिंग 1,30,000, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 1,30,000। तो 5% ऑफ 1,30,000। लेकिन मशीनरी के ऊपर कह रहा है 10% ऑन कॉस्ट। तो सी द ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? Machinery up to 31st March 2014 40,000 is 1,60,000। देखिए मशीनरी का WDV 1,60,000 है, जबकि उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो हो चुका है वो 40,000। 40,000 रुपए डिप्रिसिएट करने के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू WDV 1,60,000। तो उसका कॉस्ट कितना हो गया? 2 लाख। 1,60,000 प्लस 40,000, 2 लाख रुपये का मशीन था जिसमें 40,000 रुपए डिप्रिशिएट कर दिए। अब इस वक्त उसका WDV 1,60,000, लेकिन हमको 1,60,000 नहीं चाहिए, हमको WDV नहीं चाहिए, हमको कॉस्ट चाहिए। तो डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। WDV प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट। तो 2 लाख रुपये के ऊपर 10% 20,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन 26,500। देन राइट ऑफ गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, गुडविल को और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दो, बोल रहा निकाल दो। तो निकालने के लिए विल टेक अंडर अदर एक्सपेंसेस। राइट ऑफ करने के लिए वी राइट ऑफ अंडर अदर एक्सपेंसेस। तो ये अदर एक्सपेंसेस में गुडविल रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, दोनों को भी निकाल दिया। देन प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is 5% on debtors, ये न्यू प्रोविजन। देखिए ओल्ड प्रोविजन इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, न्यू प्रोविजन इज जस्ट नाउ गिवन एन एडजस्टमेंट 5% ऑन डेटर्स। तो यहां पर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन। इफ न्यू प्रोविजन इज मोर देन ओल्ड प्रोविजन, द डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। द डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब न्यू प्रोविजन कितना है यहां पर केयरफुली। Provision for bad debts new 5% of 1,19,000, ये 1,19,000 डेटर्स है। तो 1,19,000 का 5% 5,950, ये न्यू प्रोविजन। और ओल्ड प्रोविजन जो रहता है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दे दिया 1,500। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन 1,500 है, न्यू प्रोविजन 5,950 है। तो दोनों का डिफरेंस माइनस कर लो, 4,450 आउट करो। So remember one point, if the new provision is more, take the difference as positive. Take the difference as positive value. अगर old new provision कम है, if the new provision is less than old provision, then take it as a negative value. Outer column में negative value लेंगे अगर new provision कम रहा तो। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में कम नहीं है, ज्यादा है। न्यू प्रोविजन 5,950 है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 1,500, माइनस कर दो 4,450 आउट ऑफ। डायरेक्टर्स रिकमेंडेड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये डायरेक्टर्स रिकमेंड कर दिए कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जो भी यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10% अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट में से निकाल देंगे और जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे। तो दोनों इफेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होगा। ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का इफेक्ट जो होगा
वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही रहेगा, खाली प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे. Then a dividend of 10% declared. Proposed dividend. Proposed dividend 10%. 10% on capital, equity capital. The equity capital is 2,80,000. 2,80,000 का 10% 28,000 rupees is the proposed dividend. अब इसका इफेक्ट भी खाली बैलेंस शीट में ही आएगा. तो proposed dividend will be deducted from profit. Deducted from profit in reserves and surplus. जो reserves and surplus रहेगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के प्रॉफिट में से प्रपोज डिविडेंड माइनस करेगा और यही प्रपोज डिविडेंड को अदर करंट लायबिलिटी में या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बताएं. वी कैन शो इट एज अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट. प्रपोज डिविडेंड ये हो गया. देन इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी इग्नोर कर देना. You are required to prepare the profit and loss statement for the year ended and balance sheet as at that date as per the provisions of the revised schedule 3. That's it. We have discussed all the points. Now you see carefully. Profit and loss statement for the year ended. Revenue from operation एक ही item is sales, only sales. Then in other income में only one item, share transfer fees. Other income only share transfer fees. Cost of material consumed में opening stock of material, add purchase minus closing stock. Last 2-3 problems we are doing the same thing. There is no new point in ascertaining cost of material consumed. Then employee benefit expenses में wages and salaries, only 2 items. Finance cost में debenture interest paid 3,000, add interest outstanding. अब देखिए debenture interest के लिए interest paid 3,000 दे दिया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 3,000 दे दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी हाउ मच आर द डिबेंचर्स. द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस यू कैन फाइंड 6% डिबेंचर्स 1 लाख. क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन द प्रॉब्लम यू कैन सी 6% डिबेंचर 1 लाख. तो 1 लाख रुपए के ऊपर 6% कैलकुलेट करे तो 6,000 रुपीज इंटरेस्ट होता. तो 1 साल का इंटरेस्ट 6,000 रुपीज होना. लेकिन डेबिट साइड पे जो दिया इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ओनली 3,000. तो 6,000 में से सिर्फ 3,000 रुपए डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिए जो डेबिट साइड दिया. बाकी के 3,000 रुपीज और देना है, आउटस्टैंडिंग है. तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी एडेड. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,000, 3,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिए और 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है. टोटल इंटरेस्ट 1 साल का 6,000 रुपीज होता है. अब जो 3,000 रुपीज इंटरेस्ट नहीं पे करे दैट विल बी टेकन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा. यहां पर है अदर करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 5. तो नोट नंबर 5 में देखिए आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 3,000 जो पे कर दिए वो एक ही बार, जो आउटस्टैंडिंग है वो 2 बार. आउटस्टैंडिंग यहां पर भी ले लेंगे, फिर अगेन इट विल बी शोन एज ए अदर करंट लायबिलिटी. Then we have finance cost हो गया. depreciation, just now we have discussed about depreciation. Other expenses में insurance, carriage on sales, bad debts, administrative expense, provision for bad debts. Just now I told goodwill written off, preliminary expense written off. The total is 47,450. The total of expenses are 3,49,950. अब माइनस करेंगे 3,63,500 माइनस 3,49,950, 13,550. तो 13,550 is profit before tax. There is nothing given regarding provision for taxation in the problem. So profit after tax is 13,550. ये profit after tax. Income statement, profit and loss statement we have completed. Now we'll come to the balance sheet. Balance sheet में shareholders fund share capital 2,80,000. Problem में दे दिया share capital, equity capital 2,80,000. Reserves and surplus में careful रहना. थोड़ा सा difficult concentration is required. General reserve तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे दे दिया जनरल रिजर्व 15,000. ये ओल्ड एग्जिस्टिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व का. ड्यूरिंग द ईयर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दैट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट में दिया करंट ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 10% शुड बी ट्रांसफर टू जनरल. तो करंट ईयर नेट प्रॉफिट इज 13,550. 13,550 का 10% 1,355. तो ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर 10% ऑफ 13,550 1,355. ऐड कर दो 16,355.
ये reserve, general reserve. Now profit and loss account balance. Profit and loss account balance 20,000. Net profit for the year 13,500. ये problem में दे दिया. In the problem credit side you can see profit and loss account balance 20,000 old balance. और current year का जो net profit आ गया 13,550. ये दोनों को ऐड कर देंगे 33,550. This is the total profit available. अब ये total profit available में से appropriation करना है. First ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अभी यहां पर जनरल रिजर्व में ऐड कर दिए थे ना, तो प्रॉफिट में से माइनस करना और जनरल रिजर्व में ऐड करना. देखिए नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1355 और ये 1355 को यहां पर ऐड कर 32,195 बचा. अब उसमें से प्रपोज्ड डिविडेंड. इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन द डायरेक्टर्स हैज प्रपोज्ड टू पे ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन कैपिटल. हमेशा डिविडेंड जब भी रहता कैपिटल के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. तो 2,80,000 इंटू 10% 28,000 रुपीज इज द प्रपोज्ड डिविडेंड. माइनस कर दो तो रिमेनिंग प्रॉफिट 4,195. 4,195. द टोटल इज 20,550. द टोटल ऑफ द रिजर्व्स इन सरप्लस इज 20,550. हियर वी हैव टेकन. नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नोट नंबर 3. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ही आइटम है 6% डिबेंचर्स 1 लाख. ये हो गया. देन करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. तो प्रॉब्लम में बैंक लोन दिया, इट इज नॉट गिवन सिक्योर्ड. अगर बैंक लोन सिक्योर्ड अगर देता तो वी वुड हैव टेकन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओनली बैंक लोन इज गिवन, सो वी हैव टेकन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. बैंक लोन 56,000. ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर गिवन 1 लाख. देन अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज. तो अदर करंट लायबिलिटीज में एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3,000 और एक प्रपोज्ड डिविडेंड 28,000. तो 28,000 और 3,000 मिला लो 31,000 इज द अदर करंट लायबिलिटी. द टोटल ऑफ द लायबिलिटी 5,87,550. हाफ ऑफ द बैलेंस शीट कंप्लीटेड. नाउ असेट्स. नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल. नोट नंबर 6 में देखिए टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. बिल्डिंग का WDV 1,30,000 है और वो WDV में से डेप्रिसिएशन 6,500 निकाल दो. डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड हियर 6,500 डेप्रिसिएशन. तो बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन 1,23,500. उसी तरह मशीनरी. द मशीनरी WDV इज 1,60,000. द WDV ऑफ द मशीनरी इज 1,60,000. अब उसमें से डेप्रिसिएशन 20,000 निकाल दो 1,40,000. The total of tangible fixed assets 2,63,500. We don't have any intangible assets. Then current investment. Investments are given in the problem, so we have assumed it as current investment. So we have taken 86. Inventories, closing stock 1,20,000. Here we have subtracted closing stock. Here we have to take another inventory. Then trade receivable. Trade receivable के लिए डेटार्स में से न्यू प्रोविजन माइनस करना. जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है उसको माइनस करना. तो एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन दिया है. न्यू प्रोविजन कितना है 5%. 5% ऑन डेटार्स, दैट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो उसको निकाल देंगे. हियर यू कैन सी 7th नोट ट्रेड रिसीवेबल डेटार्स 1,19,000 लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ 1,19,000 5,950. Subtract 5,950 1,13,050. That is 1,13,050. Cash and cash equivalent. In the problem it is given cash in hand 5,000. That's it. So this is the complete solution of problem number 15. Come on, now we'll start problem number 16. See the problem number 16. From the following balances, prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on the date. So again, we are given the trial balance and few adjustments. We have to make the final accounts of the joint stock company. Purchase of raw material 5,69,862. This will be taken under cost of material consumed. Then it is given stock of raw material on 1/4/2014, opening stock
तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड परचेज ऑफ मटेरियल. देन पेटेंट्स, इट्स एन इंटैंजिबल एसेट, इट विल गो टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आएगा इंटैंजिबल एसेट. फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये टैंजिबल एसेट्स में आएगा. देन प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस, कोई भी वेजेस हो, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, इट विल बी टेकन अंडर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस. देन अनपेड कॉल अकाउंट. अनपेड कॉल अकाउंट का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर. अनपेड कॉल अकाउंट यानी कंपनी कॉल करी लेकिन शेयर होल्डर अभी तक कॉल मनी नहीं पे कर, कॉल्स इन एरियर. So this calls in arrear will be deducted from subscribed capital, from the called up capital, तो share capital में 25,000 equity share of 10 each 2,50,000 less unpaid call account 200 rupees. तो एक ही इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम्स है उसका इफेक्ट एक ही होता है. देन बैड डेट्स, इट विल बी टेकन अंडर अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स आ जाएगा. रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये भी आएगा अदर एक्सपेंसेस में. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड विल बी टेकन अंडर फाइनेंस कॉस्ट. तो यहां पर देखिए फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,260. प्लांट एंड मशीनरी, इट्स अ टैंजिबल एसेट. सैलरीज, एम्प्लॉई बेनिफिट, सैलरीज को लेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट. देन डायरेक्टर्स फी. डायरेक्टर्स फी समटाइम्स इट विल बी टेकन इन अदर एक्सपेंसेस. एक्चुअली कंट्रोवर्सी है, नॉर्मली तो डायरेक्टर्स फी हमको अदर एक्सपेंसेस में लेना चाहिए. वी कैन मेक द करेक्शन हियर. डायरेक्टर्स फी 6,400 हियर विल टेक. डायरेक्टर्स फी 6,400. Here director's fees will remove it. Because director is not an employee. So directors are not employees. So employee benefit expenses 86,950. 86,950 minus 6,400. It comes to 80,550. So here we'll take 80,550. Here, other expenses we have taken 17,760. To this we add plus 6,400. So it will become 24,160. 24,160. The only difference is instead of showing it under employee benefit expenses, it will be better to show it under other expenses. Director's fee का better treatment यही है कि other expense में show करना. But in some textbook it is taken under employee benefit expenses. In some other textbook it is taken under other expense. So always make it a note. Director's fees should be taken under other expense. Next one is bills receivable, trade receivable. Bills receivable को लेंगे हम trade receivables में, current asset. Then auditor's fee, other expenses. Then rates and taxes, other expenses. Debtors, trade receivable. Sundry office expenses, other expenses. Then profit and loss statement, loss from previous year. ये problem में accumulated loss है previous year का. तो this accumulated loss will be shown under reserves and surplus. ये accumulated loss जो previous year का है उसको reserves and surplus में बताएंगे. Loss होने की वजह से उसको bracket में लेंगे, negative में लेंगे. Then bank overdraft. This bank overdraft will be taken under other current liability. Other current liability में ले लेंगे या short term borrowings में. We can take it under short term borrowings. Then bills payable, trade payable. Bills payable will be taken under trade payable. Share capital, first note, share capital. Then unclaimed dividend. Unclaimed dividend we can take it under other current liability. See here, other current liability, unclaimed dividend 1106. Provision for bad debts. ये old provision है. Exactly similar to the previous problem. हम new provision और old provision को compare करेंगे. अगर new provision ज्यादा है
तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस को अदर एक्सपेंस में लेंगे। अब देखिए न्यू प्रोविजन अभी एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर ट्रेड पेबल। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। देन वी हैव सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स जो रहेगा रेवेन्यू। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करें, क्रेडिट साइड दिया है इसीलिए रेंट रिसीव्ड है, अदर इनकम। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी विल कम अंडर अदर इनकम। हो गया ट्रायल बैलेंस आइटम्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ एडजस्टमेंट्स देखिए, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,200. द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर ट्वाइस. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिडक्टेड in calculating cost of material consumed. Secondly, the closing stock will be taken under inventories 1,40,200. एक एडजस्टमेंट हो गया। Second, depreciation on plant and machinery has to be written of 7.5%, patents 15%, premises 5%. तो तीन assets के ऊपर डिप्रिशिएट करना है, तो यहां पर डिप्रिसिएशन सिक्स्थ नोट। ये सिक्स्थ नोट में प्लांट के ऊपर 7.5% ऑफ 80,140, प्लांट का वैल्यू डेबिट साइड दे दिया 80,140। पेटेंट्स के ऊपर 15% ऑफ 1,560, प्रेमिसेस 5% ऑफ 55,026. ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। ये डिप्रिसिएशन हो गया 8,996। अब ये डिप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब प्लांट लेंगे टैंजिबल एसेट्स में डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 601। देन पेटेंट्स, ये इनटैंजिबल एसेट में पेटेंट्स आएगा, उसमें से डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। प्रेमिसेस टैंजिबल एसेट्स में से डिप्रिसिएशन माइनस। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%. तो वी कैलकुलेट न्यू प्रोविजन 5% ऑफ 45,000. सन्ड्री डेटर्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम एज 45,000. तो 45,000 का 5% 2,250. जबकि ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड पे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट इज गिवन 1,150. तो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो ओल्ड है और एडजस्टमेंट में जो देता वो न्यू है। तो अब दोनों को कंपेयर करिए, न्यू प्रोविजन इज मोर, तो 2,250 माइनस 1,150, 1,100 रुपीज शुड बी टेकन इन द आउटर कॉलम पॉजिटिव। दैट्स ऑल। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। कैरी फॉरवर्ड रुपीज 500 ऑन अकाउंट ऑफ रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस में से 500 रुपये कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब प्रीपेड, यानी करंट ईयर का नहीं है, आने वाले साल का, नेक्स्ट ईयर का है। तो रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉब्लम में दे दिया 7,756. 7,756 आर द रेट्स एंड टैक्सेस गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसमें से 500 रुपए माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो 7,076. अब ये 500 रुपीज को बैलेंस शीट में बताएंगे, एडवांस में पे करें, प्रीपेड हो गया तो करंट असेट्स में आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 9th शेड्यूल, रेट्स एंड टैक्सेस कैरीड फॉरवर्ड 500, ये 500। तो एक रेट्स एंड टैक्सेस में से माइनस कर देंगे, कहां पर, अदर एक्सपेंसेस, और वो 500 रुपए को एसेट बताएंगे अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हो गया ऑल द एडजस्टमेंट वी हैव सीन। नाउ फ्रॉम बिगिनिंग यू कैन सी डैश कंपनी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हर प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम से देखते आ रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम में एक ही अदर इनकम है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज गिवन, इट्स एन इनकम, अदर इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ये पहला प्रॉब्लम है जहां पर रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस एंड सैलरीज टोटल। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक ही फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। डेप्रिसिएशन तीनों पे कैलकुलेट कर लिए। देन अदर एक्सपेंसेस वी हैव टेकन 24,160, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली ए रेवेन्यू, बी एक्सपेंसेस। तो ए माइनस बी अगर करेंगे आप तो नेगेटिव आ रहा, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है,
revenue less, expenses more, so there is a loss. There is no income tax. Tax जब रहेगा, income रहा तो tax, no income no tax. तो loss for the year is 13,937. ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा हूं नेगेटिव आ, नेगेटिव होने से ब्रैकेट, loss for the year. This is the end of statement of profit and loss. Now we'll come to the balance sheet. Dash company limited balance sheet asset, share capital 1. तो शेयर कैपिटल में शेयर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 2,50,000 लेस अनपेड कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एरियर. तो कॉल्स इन एरियर 200 रुपए माइनस कर दो 2,49,800. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए, पहले से एक्यूमुलेटेड रिजर्व है और करंट ईयर भी पहले से लॉस है और करंट ईयर भी लॉस है. करंट ईयर का लॉस जो है 13,937 है और पहले का लॉस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दे दिया. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है, लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर 7,050. ये प्रीवियस ईयर पीवाई. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 7,050 और करंट ईयर का लॉस जो 13,937. तो टोटल लॉस, दोनों लॉसेस को मिला लो 20,987 लॉस है. इसीलिए ब्रैकेट में लिखो, माइनस करना है. जब टोटलिंग करेंगे तो 2,49,800 माइनस 20,987 प्लस 18,060 प्लस दिस वन यू गेट 3,70,000. नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3. शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक ही आइटम आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. देन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दो आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल. अदर करंट लायबिलिटी में अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, लायबिलिटी साइड कंप्लीटेड. नाउ एसेट साइड, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, 6th नोट. अब दो टैंजिबल है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक प्रेमिसेस है. तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 80,140, उसमें से डिप्रिसिएशन निकाल दिया. यही डिप्रिसिएशन है, यहां पर लिए थे. प्लांट के ऊपर 6,011, ये 6,011 डिप्रिसिएशन माइनस कर दो 74,129. प्रेमिसेस 55,026, अब उसके ऊपर 55,026 के ऊपर डिप्रिसिएशन 2,751, ये 2,751 माइनस कर दो 52,275. तो टोटल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 1,26,400. इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट में एक ही एसेट है, पेटेंट्स. तो पेटेंट्स का वैल्यू 1,560, लेकिन उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है. यहां पर पेटेंट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन 234 है. 234 माइनस कर दो 1,326. इन्वेंट्रीज तो नो डाउट अबाउट इट, क्लोजिंग स्टॉक 1,40,200. ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम्स आएंगे, डेटार्स एंड बिल्स रिसीवेबल. ये दोनों को मिला लिए तो ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं. डेटार्स में से न्यू प्रोविजन माइनस कर दो. डेटार्स में से न्यू प्रोविजन, जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया है वो प्रोविजन को निकालना. तो एडजस्टमेंट में कितना दिया, 5%. तो डेटार्स के ऊपर 5%, डेटार्स 45,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% 2,250 माइनस कर दो 42,750. उसमें बिल्स रिसीवेबल ऐड कर दो 48,800. ये ट्रेड रिसीवेबल. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस. तो कैरी फॉरवर्ड करे थे ना, यहां पर 500 रुपए. रेट्स एंड टैक्सेस लेस प्रीपेड, ये प्रीपेड है, एडवांस में पे कर दिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में. लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दैट विल बी टेकन 725. दैट्स ऑल. This is the complete solution of problem number 16.